am very proud that you all have joined for this important topic known as the patent registration, copyrights, trademarks. So that's my humble request to all of you that please ensure that in your mobile the link is there and test whether the link will be, you are in a position to join it. If any some software is need to be updated and all these things, so that you can join it at right time. Okay, and also appeal that if your student groups are there, then you can forward the link on your student group, so that the student will also get benefit of that IPR session 1 given by the Assistant Commissioner of IPR, Dr. Raju sir. Okay, thank you. So session will start within just 5 minutes. Okay, thank you. Good morning, esteemed guests, faculty members and dear participants. It gives me immense pleasure to welcome you all to the National Level Faculty Development Program on Training of Intellectual Property Rights, organized by ASM International Pune Chapter and ASM Students Club of PVG-CUT. This event marks a significant milestone in our collective journey towards fostering a deeper understanding and appreciation of IPR. At the outset, I would like to extend a warm welcome to our esteemed guests and experts in the field of IPR who have graciously agreed to share their invaluable knowledge and experiences with us. I welcome Dr. Samir Bhosle, Vice Principal and HOD PS Model College and SPPU Senate member, and Dr. Girish Modak sir, US member of SPPU Mechanical Board. IPR are the cornerstone of protecting and promoting the creative and innovative endeavors of individuals and organizations. In an era where knowledge and ideas drive the global economy, understanding the nuances of IPR is crucial for educators, researchers, and students alike. Over the next few days, we will delve into various aspects of IPR, exploring topics such as patents, copyrights, trademarks, and legal and ethical considerations surrounding them. I request HOD sir to kindly speak a few kind words about the training session. Thank you. Honorable Sri Gupta sir, the Chairman of ASM, Honorable Jute sir, the Vice Chairman of American Society for Materials, and Honorable our Director, Professor R.G. Kaluskar sir, Professor Sunil Redekar sir, the Director of PVG-CUT, Honorable Principal sir, all the participants, the board member, the senate member, various heads of department, and all the faculty members. And it's a proud moment for me to organize this event of organizing the event of IPR, that is the intellectual property right. We all are completing the projects under our guidance, but the projects whatever we are completing are not copyright, are not trademark, or are not patented. So it's a time for all of us that we should take initiative that the number of patents should be registered, and for that purpose this 5 days, 1 week session
that we have organized, and this is the concept of our Honorable College Authority, that we should focus on such topic which will be definitely helpful for the nation also. So with this kind word, I am thankful to all the participants, all the dignitaries. Thank you very much. I request Sir, FDP Coordinator Mechanical Department, to give introduction about Mr. Rahul Gupta, Chairman ASM International. So good morning everyone. So first of all I welcome Chief Guest Rahul Gupta sir. Gupta sir is having very large information, but due to time crunch I am just sum up in few words. Rahul Gupta sir is now currently Chairman of ASM Pune chapter, as well as sir has served Vice Chair, Secretary, as well as the Trustee for ASM International, and he is one of the first from the Pune chapter. Sir is also the metallurgist or consultant to Automobile Research and Association of India (ARI) and various engineering institutes. Sir is also owner and managing director of ND Gupta Enterprises Private Limited, Pune. Sir has specialization in heat treatment and process manufacturing of steel casting. Sir is working from 1984 and is still working in steel industry. So first of all, I welcome you, and I request Sri S.P. Redekar sir, our director sir, to please felicitate our chief guest. So welcome sir. Thank you, sir. Now I request Gupta sir to say few words about the ASM Pune. Thank you, Dixit sir, for the introduction and the opportunity to interact with you all. Sir has already spoken about the importance of IPR. When I started my career, IPR was something just at one corner of my mind. In fact, we never thought about it. But today it's very, very important. But I'm not going to talk on that because we have a lot of experts on that. I'll just tell you briefly a little bit about ASM and how we are associated. ASM is the largest materials information organization. We are an organization of industry, academia and students. So today we have all three here. We have students also, we have industry also, and we have academia also. So our aim is to connect the three. Okay, and each of us contribute through our individual experiences. It is not like I'm the expert in something and so I talk everyone. Our funda is that you need not be the smartest person in the world. In fact, you should not. If there is somebody smarter than you, then you will learn more. And just to tell you, we operate at three levels. There is the international level where we have about 13,000 members globally. Then at the national level, where we operate through chapters. So we have chapters, about 100 chapters globally. We have chapters in USA, chapters in Europe, chapters in Australia, chapters in India. In India we have 7 chapters, and under Pune chapter we have 5 student chapters. So Mr. Chupte will talk a little bit more about the student chapters. And our aim in these programs is to have industry or some domain experts whenever they are available. We organize events. Last year we did one event. This year somehow it got cancelled. We have another event coming in December, so that time we will be having a lot of experts who can plan one event. So, not taking much more time, I just wish you all the best for successful content of it. Thank you, sir. Okay. So now our guest of honor, Mr. D.G. Chute sir. Sir is also Vice Chairman and Head of Student Outreach Program, ASM Pune chapter. Sir is also a metallurgist, passed out from the CUEP 1976. Sir has worked with the various industries in what we can say quality testings, different industries like Trinity, Kalyani, Patheja, Mansi from 1998 to till now. And sir right now is working as a consultant around the Pune and different OEMs. And sir is giving us lots of guidance related to the student activities. So now I request our director, Professor Rajiv Kaluskar sir, please felicitate our guest of honor, Mr. D.G. Chute sir.
welcome. Now I request Chute sir to say a few words about ASM to our students. Respected dignitaries on the dais, on the PVG, professors, lecturers. I am here to just brief you about the NSM International Pune chapter, student chapter basically. So we are having, in Pune we are having 3 chapters. One is at D.Y. Patil College, one is here at PVG College. And 2 chapters at this government polytechnic. There is no chapter formally present there, but still we, as a help, we are conducting different type of technical series of lectures which is related to their subjects. And 2 chapters, one is at Women's College of Engineering, Nagpur, and another is the GIT College, Google Institute of Technology, Belgaum. The whole idea is that we are conducting different type of technical skills. FDP also we are arranged at D.Y. Patil at Sihagarh College also. And most important is that to attract the young generation after passing their 10th, 11th and 12th standard, we normally conducted this students material camp for 2 days. Last month, this year we have conducted this camp at Government Polytechnic. And I request PVG principal to have this program here also. What is technical and other help is there, we are ready to help you out, so that we can attract the people. And regarding this program is altogether a different topic, because we are adding the FDP on the normal topic, and this is a special topic. So I wish you all the best and best in your future career. Thank you. Now I request our principal sir to felicitate Mr. Samir Bhosle. Senior member of SPPU, so we welcome. Thank you, sir. Now I request our department HOD to felicitate Dr. Girish Modak sir, VS member of SPPU, Mechanical Department. The board member of Mechanical, Dr. Girish Modak, we are proud of you, sir. I request Radical sir to speak few words about the Okay, sir, discuss the few words. Okay, good morning to all. The chairman of ASM, Sri Gupta ji, being the MD of Gupta Industries. Then Sri DG Chivte, Vice Chairman, ASM. The Senate member of Pune and the head of PES Modern COE, Professor Dr. Samir Bhosle. The Board of Studies member of Mechanical and maybe our old colleague and student alumni, Dr. Girish Modak, my colleague director and the ex-chairman of Vidyarthi Graha, Sri Sunil Redekar, the principal of the college, Professor Dr. Manoj Tarambe, the head of Mechanical Engineering, Professor Dr. M. Munkar, the coordinator of this FDP, 5 days FDP, the teachers, all the participants from various institutes from Pune, outside Pune, and our college, the student participants. It gives me an immense pleasure to welcome you all on behalf of Pune Vidyarthi and the college for this 5 days FDP is on hands-on training on IPR. I think as you are all aware that this type of FDP, because this is the very first special occasion in PVG, I can say that all the departments, all the 7 departments of PVG are simultaneously conducting the 5 days FDP at different locations, and I think that's a critical thing. And the main aim and objective of having all those FDPs to be conducted is, like as you are all aware, that we have been having 1 month back the MAT team visited a campus and accredited for the 3rd cycle as an A grade. And I think we are very proud of it for that. No doubt we have been planning for A plus or maybe higher than that. But A is supposed to be again a good grade, and it was been the thought that when we are having such type of grade with us in 3rd cycle, why we should not go for autonomy. And for that purpose, I think we have done all the things, and the requirement of the autonomy is like to have all these interdisciplinary, multidisciplinary or maybe transdisciplinary approach in having all these activities to be conducted, and that's the way that we are having all these activities being planned. And it's again the another aspect is like everyone participates outside the institutes in different colleges,
such FDPs. So why not to have the FDPs in our campus and have the faculties of our own college and other colleges to give the benefit of all this participation and give the knowledge in the related field. And I think the IPR is one of the important concepts. As Gupta sir says, that when we have been in our old system, we never heard of patent and all those. But nowadays, patent is all, we talk about whatever we do, whatever the inventions or whatever we are having new ideas, okay, the creator or the inventor has to protect his creation or invention, and that's the IPR comes into play. And there are a lot of mechanisms, there are a lot of methodologies, and to me I think there are all classifications of patent, but I will categorize only two, the product patent and the process patent. And as an engineer, yes, we are all being utility patents, then the provisional patent, the design patent, and definitely the process patent. I think we should work on that. And that's the main aspect, that when we have been working in engineering field, we are guiding so many projects, we are doing research, we did a research, then can we have the innovation to be promoted on a big way, and to promote that innovation and research on the campus, and maybe this is passed on to the other institute. I think this is the right platform that will find his FDP. So I give my sincere thanks to our chief guest, Sri Rahul Gupta ji, the guest of honor, Sri D.G. Chivteshi, then our Senate member of Pune University, University, Dr. Samir Bhosle, and all the experts, those who are going to conduct these sessions, for accepting our invitation and being present on this. And yes, of course, all the participants, your participation makes us, give us an encouragement to conduct such type of activities in future. And with an assurance to Chivte sir and all Gupta sir, that probably as you are talking of December, we will have maybe some other activities, some good programs in collaboration with you. And with your all this support, I think we can have all such type of activities running in future in our campus. So with these words, we've given all the thanks to participants and all the organizing team of this FDP. I conclude my speech. Thank you very much, and wish you all the best. I request Principal Sir to speak a few words about the Vote of thanks of the dignitaries on the dais, my colleagues, then staff members from various colleges. Only one thing I will highlight, that is the thing, but almost in 2015 I was in China, Shanghai, Nanjing, Beijing, and at that time on each and every airport, railway station, so thanks mechanical department for organizing such type of good event, and this is really one of the highlighting burning cutting edge technology issue, I will say, that country has to march to create proper what we say strength, wisdom at the national and international level. I thank our management members, Shri Sunil Redekar sir, ex-chairman of PVG and director of the college. Then Professor Rajendra Karuskar sir, director PVG and director of the institute. Then Gupta sir, who is ACM office bearer. Then Chivte sir, when you are there, we find it homely. Why? Because we are having so many times interaction, and your blessings are always with us. So thanks for that. Very dedicated to student activity. Yes. Yes. Samir Bhosle sir, so he is a Senate member, sparing his valuable time, sir is here.
and then member BOS Mechanical, our own alumni, student, my student, alumni, then faculty member of this college, faculty member of the other college, and the board member he is representing, Girish Modak sir. I welcome you all and thanks for sparing valuable time. So I think this is the right time to start your what will say online session. So with this, I wish you all the best. Your stay for 5 days will be what you will remember this day, this timing. So by food and by the presentations which mechanical department has arranged. So many case studies are there. So that is a highlight of this program. So highlights of this program. So with this, I wish you all the best and conclude this opening function. Thank you. Thank you. Just 5 minutes for starting our first session of this IPR program. So thank you very much everyone, our dignitaries, chief guests and member of our manager of PVG college. So thank you for the invitation. Thank you. So the session first is the online session by Assistant Commissioner of Patent, Dr. Raju sir, who has graduated postgraduate from IIT Delhi. So he will be taking the session. The link is given already. So we will on our WhatsApp group which we have created. So let us join that, and then the next session will be with Dipti Patil Madam, the board member of IT, who will be taking on the various filing the process, design process and all. So with this, today's session is there. Thank you sir. ऑनलाइन सेशन के आयोजन करने के लिए आपकी सभी
Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. चांगले Participants are waiting. Okay, sir. Okay. We are ready, sir. Sir, Chaitanya, HOD, SMS, all our friends, circle is there. More than that. आधीचे पेपर आताचे सगळे पुणे विद्यापीठ आमच्या बाजूलाच आहे माती आहे. आणि एका फोनवर येतात सगळे मुलांना पाठवतो प्रत्येकाने तिकीट त्याला पाठवून सोडायला बसले सर seek the protection in India, under which ministry it is being covered. So it is a small production that it is covered by the Ministry of Commerce and Industry under the Department of DPI, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. And the office is Office of Controller General of Patent, Design, Trademarks and Geographical Indications. And we have 4 offices, different types of intellectual properties for the different works. For patent and design, you can file your invention or ask anything about Kolkata, New Delhi, Mumbai and Chennai. We have in Nagpur, we have a training center in Nagpur. From this month I am delivering this lecture. Another is trademark office in Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai and Ahmedabad. After that there is we have office in Chennai. Geographical indication, okay? So we will discuss each one. These are the offices building, and this is the office building of Nagpur from where I am delivering this lecture. This is our official website, and I request all of you, if you have certain time, you must visit this website. This is very informative website and very updated website. Now come on the updates. Also updates on the social media. We have updates on the Facebook and Twitter. For the different programs we are conducting, and any update is there, all is available on the social media also. Okay? So come to know, first of all, you should understand what is intellectual property.
So intellectual means intellect. Whose intellect? Human mind. No animal or other than animal, their intellect is not counted for the intellectual property. Only human mind is has been considered for machine learning, artificial intelligence. All these has been excluded under the intellectual property. Okay, so it is solely governed by the human mind. So the basic thing is that how you understand it. So intellectual property is a property that arises from the human intellect and it is a product of human creation. Okay. So no other creation has been considered. Only human creation has been considered as an intellectual property. Okay. So what are the intellect? What are the human intellects? That can be considered as an intellectual property. Okay? So these are the certain examples. This is an Australian company who has developed a shoe that uses ultrasonic sensor so that blind people can detect obstacles up to the 4 meter away. Okay? So that will help a blind person to detect any obstacle. Yes. Student volunteer kasihan Principles are almost same, but what is going to change from the time to the time? The changing is with the applications. What are the different applications? So you can see the application. Okay? How you can apply your brain. So use that principles to improve the application. So one thing I want to say, when 200 or 300 years back, at that time there was mechanical devices were being invented or devised. After that, electricity introduced into it, and after that, microprocessors, sensors, it is being introduced into it. Now that has also improved. Semiconductor devices, semiconductor integrated circuits, all these are being introduced in that machines. So that is the flow of the technology. So first of all, we have to understand where we are standing and how we use that technology for our purpose, for our benefit. That is the purpose of this intellectual property. If there is certain technology you have, you must transfer your technology. And how you can transfer? So you can transfer to the office mode. We have the certain offices through this official channel or legal channel or official channel. You can transfer your technology to the public. Okay? So let us see what is the ground of the intellectual property. So we have property unappliable to text, tangible and intangible properties, tangible properties. Intellectual property is further divided into industrial property and industrial property belongs to the meaning and psychological indications. Okay, so basically why intellectual property came to market? So thing was always to protect the technology. So if you have new technology and government will give the new incentive, then the inventor or the industry they will make the new technologies, and for that technologies we will give to them by industrial property right. So industrial property rights will be given in the form of patent, design, trademark and geographical indications. Okay. So these are the types of IPR: patent, copyright, trademark, industrial design, geographical indication, we have the type of IC, protection of plant varieties, protection of trade secrets, and we will discuss each one of them one by one so that
we will understand what is it. Okay? So, first of all, what is intellectual property? It is an intangible creation. It is must belong to humanity. It must have certain commercial value. Or it should be used like an asset. Okay? Like any other property, you can use this intellectual property like an asset. Okay? On the basis of intellectual property, you will get the intellectual property rights. These are the exclusive rights. Exclusive rights means making any website, making any technology, prediction in that technology. If you want that nobody can use it without your permission, without your information, so in that case you should have exclusive right. So this intellectual property will provide you the exclusive right. And intellectual property rights means it is a legal right. And laws, statutory bodies changes from one territory to another territory. So law changes from one territory to another territory. Likewise, intellectual property changes from one territory to another territory. Okay? So in the territorial right, it is not a universal right. It is a licensable right. On the basis of the intellectual property right, you can transfer your technology to another person using the licensing fee. Okay? So what is patent? Patent is an exclusive right. It is granted by the central government only. No state government have the authority to provide the certificate. It is given to whom? The owner, the patentee. Okay? And the protection is for the 20 years. Initially it was for the 14 years, after that 16 years. And right now it is for the 20 years of the time. Okay? And purpose is the commercial gain. And in consideration of that, what is our push? आपको जब भी आप पेटेंट फाइल करते हैं तो आपको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना होगा कि आपने उस इन्वेंशन में किया क्या है, ताकि कोई भी उसको पढ़ करके उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सके या 20 साल के बाद उसको पब्लिक यूज कर सके. अगर डिस्क्लोजर कंप्लीट होगा तो उसको कोई पब्लिक यूज कर पाएगा, अदरवाइज नोबडी कैन यूज इट. ओके, सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पेटेंटिंग. अब इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन मीन्स कोई प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, कोई यूजफुल प्रोडक्ट है, नॉवेल है और नॉन ऑब्वियस है और ये पब्लिक में यूज नहीं हुआ है. कहने का ये मतलब है कि आपके डिस्क्लोजर से पहले इसको पब्लिक बिल्कुल भी नहीं जानती कि क्या चीज था. ओके, सो इन्वेंशन मीन्स न्यू और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो यूजफुल होना चाहिए. अनयूजफुल इन्वेंशंस हैव नो मीनिंग. ओके, इट मस्ट बी यूजफुल. तो हम लोग देखेंगे यूजफुलनेस का डेफिनेशन, अलग अलग इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे. ये देखिए सैपनर है, सैपनर को 1822 में उन्होंने पेटेंट फाइल किया. ओके, सो आज के दिन में आप कहेंगे ये तो बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, बट एट दैट टाइम इट वाज अ मेजर इन्वेंशन. सो कहने का ये मतलब है आज हमें जो चीज मेजर लगता है वो हो सकता है 100 इयर्स के बाद वो बहुत ही नॉमिनल चीज हो जाए. तो एवरीबॉडी कैन यूज इट. So that's why it flows from one generation to another generation. The technology, it is the flow of the technology. Okay, Thomas Alva Edison he had invented this called Bluetooth device. It is being invented by the Jack Aston in 1994 and he filed for the patent. Okay, and these are the some Indian inventors also who they have won millions and millions of dollars from these inventions only. Okay, so important is your invention and it must be useful to the public. On the basis of that, you will get the commercial benefit. So these are the certain examples of the patents. Patents means it involves the solution, problem solution approach, and that solution must have certain technical solution. And आप उस technical solution के लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं इन्वेंटर के द्वारा. वो क्या क्या मिस्टेक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पेपर को पहले पब्लिश कर देते हैं इन्वेंटर. आप पेपर को जैसे ही पब्लिश करिएगा वो क्या होता है, उसका जब पेटेंट फाइल करिएगा, पेटेंट फाइल करने के बाद हम लोग ऑफिस जो पेटेंट पब्लिश डॉक्यूमेंट चेक करती है. तो पब्लिश डॉक्यूमेंट जैसे ही मिल जाएगा हमने बोला ये तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो फिर इसका प्रोटेक्शन हम लोग आपको नहीं दे पाएंगे. तो आप पहले क्या करिए, आप पेटेंट के लिए फाइल करिए, उसके बाद आप पब्लिकेशन के लिए जाइए. ओके,
इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग, आपको कोई चीज यूज नहीं करना पड़ेगा. ओके, सो योर आपका जो टेक्नोलॉजी, आपका जो इन्वेंशन है वो 100% प्रोटेक्शन में आ जाएगा. अब डिजाइन देखते हैं. तो डिजाइन क्या होता है? अब डिजाइन ये होता है कि मान लीजिए क्या होता है, शॉप में गए तो आपने मोबाइल शॉप वाले को बोला मुझे मोबाइल दिखा दो, उसमें तो टेक्निकल और फंक्शनल फीचर सब कुछ सेम है, ठीक है ना. तो फिर आप परचेज कैसे करोगे? लेकिन एक मोबाइल का डिजाइन बहुत अच्छा है, उसका मॉडर्न लुक है, आपका एस्थेटिक लुक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपने उस डिजाइन के कारण आपने उस मोबाइल को परचेज किया, ठीक है, और आप उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा पे भी करोगे. ओके, सो उस डिजाइन के लिए यू आर गोइंग टू पे एक्स्ट्रा आल्सो. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने समझा कि डिजाइन शुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड. ओके, अब ये कुछ ट्रायल डिजाइन है, और ये जो डिजाइन जो प्रोटेक्शन होता है ना, ये सिर्फ एक आर्टिकल को दिया जाता है. ओके, तो इट इज अप्लाइड टू एन आर्टिकल. अब आर्टिकल का क्या मतलब हुआ? आर्टिकल मतलब कोई सॉफ्टवेयर जैसे कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन आपने बना लिया, उसके लिए बोले कि हमको पेटेंट चाहिए, ये चीज नहीं होगा. आर्टिकल मीन्स ये कोई भी आर्टिकल हो सकता है, वो 2D 3D 1D कैसा भी आर्टिकल हो, लेकिन वो एक आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है. वो कोई चित्र या अनुमान नहीं होने चाहिए, ठीक है. और ये जज कैसे होगा? तो सिर्फ एस्थेटिक इंप्रेशन, सिर्फ देख के सुंदर होना चाहिए, देख के अच्छा होना चाहिए, मार्केट में उसका एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है. तो डिजाइन का परिभाषा क्या हुआ? डेफिनेशन: डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर्स ऑफ द शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइन्स ऑफ कलर. उसका आकार, उसकी आकृति, उसका पैटर्न क्या है, उसका ऑर्नामेंट एंड कंपोजिशन, अलग अलग एग्जांपल से इसको देखेंगे, ठीक है. और ये अप्लाई तो किसी भी आर्टिकल में होगा, वो 2D और 3D दोनों हो सकता है. और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस से नहीं होना चाहिए. और ये मैनुअल हो चाहे मैकेनिकल करिए, केमिकल से करिए, सेपरेट किसी भी तरीके से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और हमेशा फिनिश्ड आर्टिकल को हम लोग डिजाइन के लिए कंसीडर करते हैं. अनफिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड या नेचुरल फिनिश्ड उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है. और ऑफिस कैसे जज करेगा? इसको सिर्फ आग से देख के ऑफिस उसको जज करेगा, ठीक है. तो ये हमारा होता है डिजाइन का क्राइटेरिया. अब ये जो दिया जाता है वो 15 साल टाइम के लिए दिया जाता है. स्टार्टिंग में ये 10 साल के लिए होता है, और आप 5 साल का यू कैन टेक एक्सटेंशन कोड, आप 5 साल के लिए फर्दर आप एक्सटेंशन ले सकते, ठीक है. तो ये डिजाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इससे क्या होगा कि कोई भी आपके इन्वेंशन को कॉपी नहीं करेगा, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, और आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो वो पब्लिश होगा. पब्लिश होने के बाद किसी को आपसे लाइसेंसिंग करना हो तो वो आपसे लाइसेंसिंग कर सकता है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करके वो सारी इंफॉर्मेशन को ले सकता है, ठीक है. अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं. इसका एप्लीकेशन स्मॉल स्केल और बिग स्केल दोनों इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है. अब डिजाइन क्या होता है? डिजाइन मतलब इट इज डिलीवर्ड टू द आई एंड इट मस्ट ब्यूटीफाई एनी प्रोडक्ट एंड इट मस्ट अट्रैक्ट कंज्यूमर्स एंड देयर फंक्शनल और टेक्निकल फीचर्स ऑफ द आर्टिकल एज नॉट कंसीडर्ड. इसको टेक्निकल और फंक्शनल फीचर से कोई मतलब नहीं है, इसको आंख से देखने से अच्छा लगना चाहिए, ठीक है. पहला कंडीशन यही है. जैसे कि ये डिनर सेट है या टी सेट है, इसमें आप क्या देखते हैं कि ये देखने में सुंदर होना चाहिए या फिर लेवल टू आई होना चाहिए, उसके बाद आप उसको परचेज करते हैं, ठीक है. ये फिर अनदर फार्मा प्रोडक्ट है. फार्मा प्रोडक्ट है कि सेम सॉल्ट होता है, सेम कंपोजिशन होती है, लेकिन उनकी पैकेजिंग अलग अलग होती है, सबका डिजाइन अलग अलग होता है, इसीलिए सबका कॉस्ट अलग अलग होता है, ठीक है. अब जैसे देखिए फीवर होता है, फीवर के लिए बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है. अल्कोहल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, लेकिन सबकी का वो अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, सबकी का पैकेजिंग अलग अलग है. इस कारण से सबका कॉस्ट भी अलग अलग होता है, ठीक है. सो ये क्या है? ये फार्मा प्रोडक्ट के में डिजाइन के प्रोटेक्शन है, ठीक है. डिजाइन को कैसे आप प्रोटेक्ट करिएगा फार्मा इंडस्ट्री में. अब नाउ टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट डिजाइन इंडस्ट्री. अगर ज्वेलरी को न्यू डिजाइन को अगर प्रोटेक्शन मिलता है तभी वो नए नए डिजाइन मार्केट में लॉन्च करते हैं और पब्लिक उनको लाइक करती है. और वो इन सारे डिजाइन को वो क्या करते हैं?
वो रजिस्ट्री का तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल में भी न्यू डिजाइन को क्या है कि वो प्रोटेक्शन लेते हैं और उसको फिर वो मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, अब ये अनदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये अनदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड सरफेस पैटर्न ऑफ बॉटल्स। ओके, अब ये अलग सा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। ओके, अब ये देखिए, अब जैसा मैंने बोला था कि यूजफुल, कोई भी इन्वेंशन है वो यूजफुल होना चाहिए। अभी एक इन्वेंशन ये है ट्रैफिक लाइट का, यू नो, ये डेली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ के डेली सेव करता है और इन फ्यूचर ऑल्सो इट विल ऑल्सो सेव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि हमारा मेन पर्पस ये है कि कोई भी इन्वेंशन अगर हम लोग करते हैं तो हमें इसका यूजफुलनेस देखना चाहिए। और ये है 1923 में इन्वेंट हुआ है और ये इट वाज इन्वेंटेड बाय सन ऑफ फ्री स्लेव। तो आप समझ सकते हैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके पास एक नीड आई, एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को इसने नजरअंदाज नहीं किया, उसने इसका सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन के इसलिए इसने पेटेंट फाइल किया। और ये इन्वेंशन जो है वो मेक्स आवर लाइफ सेफर। तो टेक्नोलॉजी का काम है हमारे लाइफ को सेफ बनाए, हमारे लाइफ को और इजी बनाए। ओके, नाउ आप ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन आप अलग अलग स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये अनदर रजिस्टर्ड डिजाइन है, ये अनदर रजिस्टर्ड डिजाइन है। अब ना ये हम लोग आते हैं SICLD पे, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। तो इसका क्या है, ये है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन का ये पैटर्न है। इसके लिए आपको LD1 लेआउट डिजाइन फॉर्म 1 आपको फिल करना होता है। इसमें इसका फीस जो है वो 5000 है। इसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस बताना होगा, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ग्राउंड वायर, मीटर ट्रैक है, ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, इसमें आपको ये सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, और आपको फिर ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा और इसमें जो भी ऑब्जेक्शन होगा रजिस्ट्रार आपको बताएगा। और अगर आपने सारे ऑब्जेक्शन को कंप्लाई कर दिए तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर इसको 14 डेज के अंदर इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। पब्लिकेशन के 3 महीना तक ऑफिस वेट करता है किसी अपोजिशन का। अगर कोई अपोजिशन नहीं आया तो फिर इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर अपोजिशन आया तो अपोजिशन का एक्सेप्ट किया जाएगा और फर्दर इसमें हियरिंग होगी और हियरिंग के बाद इसमें फाइनल कंक्लूजन और डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हो ट्रेडमार्क, आप इसको व्यापार चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है, जो विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड ये देख के बता दो कि आप इस कंपनी के बारे में बोल या कंपनी आपकी सही है कि नहीं। तो ट्रेडमार्क ट्रेड सिंबल क्या क्या हो सकता है, एक वर्ड है, एक नेम है, एक सिंबल है, ब्रांड है, न्यूमेरिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। अब कहने वाली क्या बात है, आपने IPL मैच देखा होगा, उस IPL में उनका एक पर्टिकुलर साउंड रहता है। कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, उनका भी एक पर्टिकुलर साउंड है। जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो विंडोज का एक स्पेशल साउंड होता है, या कोई कोलंबिया का मूवी रहता है तो वो उनका भी एक कोलंबस का उनका भी एक स्पेशल टाइप ऑफ साउंड होता है। तो यस राज मूवीज होती है, उनका भी एक साउंड होता है। तो ये क्या है, ये सारे ट्रेडमार्क सिंबल्स हैं वो, और उनके बेसिस पर इन्होंने क्या है कि ये अपने कंपनी का प्रचार करते हैं और कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी के लिए अगर आपने भी कोई कंपनी रजिस्टर करा रखा है तो आप उसके लिए भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये क्या बताता है, इंडिकेट द सोर्स ऑफ द गुड्स, और हमें ये भी बताता है ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। हाउ, बाय लुकिंग दीस टू सिंबल्स यू कैन जज दैट दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल और नॉट। इफ इट इज रिटन R with a circle, it means the trademark has been registered, and TA means trademark has been applied, but it is registration is still pending. Duration of registration is 10 years and it can be renewed. 10 साल के लिए मिलता है और आप उसको 10 साल के लिए एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको वो करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, आप ट्रेडमार्क के लिए क्या कौन कौन सा मार्क आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
ये ट्रेड नेम हो गया, ये नेम हो गया, जैसे गूगल हो गया, ये स्लोगन हो गया, ये दिल मांगे मोड, ये वेबसाइट नेम naukri.com, ये टिक मार्क है, ये लोगो है, ये पिक्चर है, ये लेटर है, ये डिजाइन है, ये लोगो, एनीथिंग कुछ भी है, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडमार्क में सब कुछ आता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब जैसे हमने ट्रेडमार्क के साइड स्टडी किया, डिजाइन स्टडी किया, पेटेंट स्टडी किया, ये तीनों किसी एक आदमी को दिया जाता है या किसी कंपनी को दिया जाता है। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है ना, वो ना तो किसी आदमी को दिया जाता है ना कंपनी को। ये किसको दिया जाता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है किसी स्ट्रीम को, किसी जगह को, किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब लेकिन ये इसका आधार क्या है? कोल्हापुरी चप्पल, आगरा पेठा, नागपुर और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये देखिए, ये दार्जिलिंग की है, ये मकाना मार्बल है, ये रतलामी सेव है, ये कांचीपुरम से है, ये सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ओके। और इसके आधार पे आप क्या है कि आपने आप उसको अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ओरिजिनल है, वहाँ पे यूनिक है, इसके कारण आपके जगह का नाम है, पहचान है, तो आप उस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक चिन्ह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई में ऑफिस है हमारा, आपको एक एप्लीकेशन देना होगा और फिर क्या कहते हैं कि एक आपको फिर एक प्रेजेंटेशन देना होगा। प्रेजेंटेशन के बाद एक हियरिंग लगाई जाएगी और उस हियरिंग के बाद फिर आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाएगा। ये कुछ अनदर एग्जाम्पल्स हैं। कठपुतली जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाली पतचित्रा, चिड़िया पेंटिंग, बर्डी वर्ली पेंटिंग, ओके। ये कुछ मगरई बाग, कश्मीरी सैफ्रॉन, शाही लीची और बिहार गुड़ ऑरेंज, ये अलग अलग ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है। नाउ कम टू द कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट एक ऑटोमेटिक राइट है जो कि अलग अलग, और ये बंडल ऑफ राइट्स के साथ दिया जाता है। तो बंडल ऑफ राइट क्या क्या है, हमें पहले वो देखना है। तो ये सारे बंडल ऑफ राइट्स है, इन सारे फील्ड में आपको कॉपीराइट मिल सकता है। तो कौन कौन से फील्ड है? लिटरेरी वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क हो गया और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो गया। इन सारे फील्ड में आपको कॉपीराइट जो है वो दिया जा सकता है, दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ऑथर कौन कौन होगा इसमें? तो फॉर लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क के लिए जो ऑथर होगा, जो उसको लिखेगा, तो कहने का ये मतलब है, ऑथर का क्या मतलब है, इसका क्या जरूरत है कॉपीराइट में? तो कॉपीराइट हमेशा क्रिएटर को दिया जाता है। हु हैज क्रिएटेड इट। सपोज दैट मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उसमें से कोई पता करा पिक्चर ले, फोटो निकाले, तो मैं उसको कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो मैं नहीं कर सकता हूँ कॉपीराइट के लिए। इसने मेरा पिक्चर लिया, कॉपीराइट का क्रिएटर, उस पिक्चर का क्रिएटर वो है, तो वो कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 10 सारे टाइप ऑफ वर्क है। ये सारे फर्स्ट ऑनर जो होते हैं वो उसका नाम है। जो लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क है उसको ऑथर बोलते हैं। म्यूजिक वर्क को म्यूजिक कंपोजर बोलते हैं। आर्टिस्टिक वर्क के लिए आर्टिस्ट होता है। फोटोग्राफ के लिए फोटोग्राफर होता है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए प्रोड्यूसर होता है। और लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के लिए द पर्सन हु कॉज द वर्क टू बी क्रिएटेड, ओके। अब क्या है टर्म ऑफ प्रोटेक्शन? क्या है? फॉर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के लिए जो टर्म है वो प्रोटेक्शन द लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स। कहने का मतलब अगर आपने कोई बुक लिखा तो आपके अपने लाइफ में तो आपको इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, और आपके लाइफ के अगले 60 साल के बाद भी योर जनरेशन, देयर नेक्स्ट जनरेशन, दे विल आल्सो गेट देयर बेनिफिट अप टू द 60 इयर्स, ओके। वैसे ही कोई सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स है या साउंड रिकॉर्डिंग है तो आपको उसका पब्लिकेशन का बेनिफिट 60 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब प्रिस्क्राइब फीस क्या है? फॉर द लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क फीस 500 एंड फॉर आर्टिस्टिक वर्क ये फीस क्या है 2000, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग फीस 2000, फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म फीस 5000, ओके। नाउ कम टू द ट्रेड सीक्रेट। तो आप सबसे पहले ट्रेड सीक्रेट होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई
हर्बल ड्रिंक बनाया या कोई भी ड्रिंक आपने बनाया या कोई भी आपने रेसिपी बनाई, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई ये आप रेसिपी का कोई नजर करिए, इसके अंदर क्या है, क्या इंग्रेडिएंट है, वो आप उससे मत पूछिए, तो वो आप उसको एज ए ट्रेड सीक्रेट रखना चाहते हैं, ठीक है। इन दैट केस गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दिया है कि आप उसको मत बताइए। आपने कोका कोला लिया, माजा लिया, डोमिनोज का पिज्जा लिया, बर्गर लिया, सो अलग अलग वेराइटीज है, और उसके लिए किसी के लिए भी आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कंपनी को कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि आप जैसे ही बताइएगा वो कंपनी तो उसी दिन खत्म हो जानी है। इसके लिए आप पेटेंट भी फाइल नहीं कर सकते। आप जैसे ही पेटेंट फाइल करिएगा आपको इंग्रेडिएंट्स बताना पड़ेगा, फुल्ली डिस्क्लोजर चाहिए उसमें, तो आपको ट्रेड सीक्रेट, इसी के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेड सीक्रेट का परमिशन दे दिया कि आप अपने ट्रेड को सीक्रेट रख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे रख सकते हैं, इसके लिए आप क्या है कि अपने इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ पीपल के साथ बताइए, सबके साथ मत बताइए, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट आप साइन करिए, और यूजिंग प्रोटेक्टिव टेक्निक्स लाइक डिजिटल डेटा, सिक्योरिटी टूल्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री इनटू द एरिया, ठीक है, वेयर ट्रेड सीक्रेट इज बीइंग, वहां पे रिस्ट्रिक्टिव टेक्नोलॉजी लगाइए, डिजिटल सिक्योरिटी टूल्स लगाइए कि कोई वहां पे एंट्री नहीं कर सके, ओके। उसके बाद क्या है कि नेशनल लेजिस्लेशंस भी प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ इंजक्शन एंड डैमेजेस। मान लीजिए किसी ने कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया, तो आप लेजिस्लेटिव जज के पास आप जा सकते हैं प्रोटेक्शन और फॉर्म ऑफ इसके लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंजक्शन डैमेजेस के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस तरीके से आप उसको गार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी जो आउटपुट जो जितने भी डैमेजेस है वो सारे आपको बताएंगे। अब डिफरेंट डैमेज, अब देखिए मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यही मकसद है कि एक प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एलईडी डिस्प्ले के लिए आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी ऑफ द लैपटॉप डिजाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका जो साइन है उसको आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो यूजर मैनुअल जो है, यूजर मैनुअल ये कॉपीराइट के लिए होगा, और लेआउट ऑफ SICL डिजाइन जो मैंने बताया था उसके लिए भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट है पर 5 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ IP। ये अनदर कोका कोला का सेम प्रोडक्ट है पर अलग अलग IP के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ये हर चीज में ये यूजफुल होगा, ठीक है। अनदर मोबाइल है, ये सिंगल प्रोडक्ट है बट मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ यूज होगा, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ओके। तो कहने का ये मतलब है कि सिंगल प्रोडक्ट है, अलग अलग मोर देन वन IPR के रूप में आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब बात क्या है कि करना क्या है, करना यह है कि आप कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अपने कलीग और अपने टीचर्स के साथ रखिए और उसका एक सॉल्यूशन निकालिए, और उस सॉल्यूशन के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन है तो उसके लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। तो व्हाट कैन बी पेटेंटेड, तो एनी प्रोसेस, एनी प्रोडक्ट वो पेटेंटेबल है। ये क्या होना चाहिए, ये न्यू होना चाहिए, उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, और सेक्शन 3 और 4 के द्वारा वो पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और व्हाट आर द प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ये भी apparatus है और डिवाइसेस है, मशीन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट्स के रूप में आप उसको पेटेंट को फाइल करा सकते हैं, ये 4 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इन्वेंशन का क्या मतलब होता है, इन्वेंशन का ये मतलब होता है कि वो आज पहले वो डिस्क्लोज नहीं हुआ हो, तो कहीं भी पब्लिश नहीं हुआ हो, किसी ने उसको क्लेम नहीं किया हो, ट्रेडिशनल नॉलेज या किसी रूप में भी वो पब्लिक में नोन नहीं हो, दैट इज द मेन व्यू ऑफ इन्वेंशन। अब इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है, इन्वेंटिव स्टेप का ये मतलब होता है कि इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांसमेंट एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज की तुलना में उसमें क्या है कि टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए और उसमें कुछ इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज है कोई भी काम 5 स्टेप में हो रहा है, आप उसको 3 स्टेप में कर लीजिए, आप 2 स्टेप आपने इकोनॉमिकली सेव कर लिया, टाइम और मनी, लेबर कॉस्ट सब कुछ सेव कर लिया, तो दैट इज मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, ओके। और बोथ एंड that makes invention not obvious to a person skilled in the art, okay।
और आपके इन्वेंशन को पढ़ के किसी को भी ये ना लगे कि ये तो कोई भी कर सकता है, इसके ऊपर बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये सारे मतलब होते हैं इसके। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी मीन्स ये नेचुरल नहीं होना चाहिए, मैन मेड होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। अब आप जो पेटेंट ड्राफ्ट करते हैं उसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना होता है, उसमें आपको टाइटल, ऑब्जेक्ट, प्रायर, ड्रॉबैक, एफर्ट्स और सॉल्यूशन, समरी ऑफ द इन्वेंशन, स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन विद रेफरेंस टू ड्राइंग, एग्जांपल और क्लेम, ये सारी चीज आपको उसमें डालनी होगी, ठीक है। ये कुछ कंबाइंड एग्रीकल्चर मशीन है, जो ड्राइंग आपको दिखाया गया है। और इसमें देखिए पेटेंट में ना रेफरेंस न्यूमेरल इंपॉर्टेंट होता है, और जो इन्वेंटिव फीचर है वो आपको क्लियरली डिफाइन करना है। जैसे इस वाले की जो बेल्ट है वो एक बार में एक ही प्रोडक्ट को उठा रहा है और उसको सेग्रीगेट करके फिर वो आउटपुट तक पहुंचा रहा है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। तो ये एक एग्रीकल्चरल मशीन है, तो इसका जो यूज है ना वो ड्राइंग में पता चलना चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे पेटेंट को ड्राफ्ट करते हैं, क्लेम को, तो क्लेम को ड्राफ्ट करने के लिए दो पार्ट में क्लेम ड्राफ्ट होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लेम। तो जितने भी कंस्ट्रक्शनल और फंक्शनल और टेक्निकल फीचर है वो सारे आपको इंडिपेंडेंट क्लेम में लिखने होंगे, और उसको वन बाय वन आपको डिपेंडेंट क्लेम में आपको एक्सप्लोर करना होगा। आपको उसको ओपन करके बताना होगा कि मेरा ये फंक्शनल फीचर है, ये मेरा टेक्निकल फीचर है, ठीक है। अब क्या है पेटेंट इन इंडिया, पेटेंट फाइलिंग दो प्रोसेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इन दो प्रोसेस से आप पेटेंट फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये these are the appropriate offices: मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, द इंडियन टेरिटरी ऑफ देवन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ये क्या है, मुंबई में आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। What are the minimum documents required? You have to file Form 1, Form 2, Form 3, Form 5, Form 18. Okay? ये सारे फॉर्म्स आपको फिल करने पड़ेंगे। अब Form 1 में क्या है, आपको 1600 है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन देने होंगे, नेम, एप्लीकेंट नेम, आपका सर्विस ऑफ एड्रेस, हु इज द इन्वेंटर, ये सारे डिटेल्स आप Form 1 में देने होंगे। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन Form 2 में देना होगा, इसका कोई फीस नहीं लगता है, ठीक है। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 30 पेज तक होना चाहिए, 30 पेज तक कोई फीस नहीं है। अगर 30 पेज से एक्स्ट्रा जाएगा तो 20 सीट के लिए आपको 160 रुपीज देने पड़ेंगे, और फिर अगर 10 क्लेम उसमें फ्री रहता है। 10 क्लेम के बाद अगर आप एक्स्ट्रा क्लेम डालेंगे तो आपको इस क्लेम के लिए 320 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी फाइलिंग के लिए 10% एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग के बिना रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन नहीं चेक होता है, तो फॉर्मेटिंग के बिना एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसका फीस है 4000 रुपीज, ओके। एंड आगे पब्लिकेशन चाहते हैं तो Form 9 के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक टाइमलाइन है, प्रोविजनल टू कंप्लीट 12 मंथ्स का, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 48 मंथ्स, रिप्लाई टू एफआईआर 6 मंथ के अंदर, Form 3 6 मंथ के अंदर, Form 5 जो 1 मंथ के अंदर। आप चाहे तो एप्लीकेशन फाइल करने के 15 महीने के बाद आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, और जो भी हियरिंग होती है उसका 15 दिन में सबमिशन चाहिए। प्री ग्रांट अपोजिशन जो है वो बिफोर ग्रांट होता है, और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन जो है वो 1 ईयर आफ्टर ग्रांट वैलिड रहता है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा ऑफिस का वेबसाइट है, आप इसको जरूर विजिट करें। और जो आप जिस भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको यू वांट टू लर्न मोर, यू विजिट दैट वेबसाइट एंड यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन देयर। और ये अलग अलग फॉर्म्स है यहाँ पे, वेरियस फॉर्म्स का ये ऊपर लिंक है, आप जब इस लिंक पे जाइएगा तो सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। और ऑनलाइन फाइल का ये मोड है, आप इसके थ्रू भी ऑनलाइन में आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेटेंट ग्रांट का पोस्ट प्रोसीजर है, फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, डिजिटाइजेशन, स्कीमिंग एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या अगली पब्लिकेशन होएगा, पब्लिकेशन जो है 18 महीने के बाद पब्लिकेशन होगा इसका। आप जब वो आपने जब पेटेंट फाइल किया है तो उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद फाइल अलॉट किया जाएगा एग्जामिनेशन ग्रुप में, और एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आपको सप्लाई किया जाएगा, उसके 9 मंथ के अंदर आपको जवाब देना होगा। और उसके बाद क्या है कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर रिप्लाई, आपके जवाब के आधार पे या तो वो ग्रांट होगा या फिर रिफ्यूज होगा। तो और अगर वो रिफ्यूज होने से पहले एक बार आपको हियरिंग भी दी जाएगी, तो
बिफोर ग्रांट और रिफ्यूजल और आफ्टर पब्लिकेशन आप कोई भी प्री ग्रांट अपोजिशन उसमें डाल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ग्रांट के बाद पब्लिकेशन के ग्रांट के बाद वो आपका ग्रांटेड क्लेम पब्लिश होगा और पब्लिकेशन के 1 ईयर के अंदर में कोई भी पोस्ट ग्रांट अपोजिशन उस पर डाल सकता है, ठीक है। सो ये सारे क्लॉज है पेटेंट ग्रांट प्रोसीजर के। अब हम लोग डिजाइन क्या है, तो डिजाइन का 1000 रुपीज फीस है एंड 4000 फॉर द कंपनी है। इसमें भी फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 में आपको एप्लीकेंट्स फुल नेम, नेशनलिटी, लीगल स्टेटस, एड्रेस फॉर सर्विस, क्लास नंबर, नेम ऑफ आर्टिकल, ये आपको मैं बताता हूँ क्लास नंबर एंड नेम ऑफ आर्टिकल क्या होता है, ये सब कुछ आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन शीट आपको डालना है, एटलीस्ट 4 सेट, 4 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन शीट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको वकील लगते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं, आप चाहे तो खुद भी फाइल कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट अगर है तो आप वो भी दे सकते हैं, इसके पहले ही कहीं और फाइल हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो क्लासेस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होता है ना अंडर रूल 10, ये लोकार्नो क्लासिफिकेशन द्वारा डिसाइड होता है। लोकार्नो क्लासिफिकेशन में 32 क्लासेज हैं, 237 सब क्लासेज, ठीक है। और ये क्लासेस और सब क्लासेस में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फाइनल अथॉरिटी कंट्रोलर के पास होती है, वो डिसाइड करता है कि आपका क्लास क्या है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ क्लासेस है, जैसे फूड स्टफ का है, कोई खाने पीने का आइटम है वो क्लास 1 में आएगा। क्लास 11 में आर्टिकल ऑफ एडॉर्नमेंट है, ठीक है। क्लास 16 में फोटोग्राफी है, 17 में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये सारे अलग अलग लिस्ट ऑफ क्लासेस हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो जिस भी क्लास में आता है उसको आपको आइडेंटिफाई करके फॉर्म 1 में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होता है रिप्रेजेंटेशन शीट का। तो ये रिप्रेजेंटेशन शीट आपको ऐसे मिलेगा, ये 10x15 का होना चाहिए, लेंथ और विड्थ इसका। और इसमें नेम जो है वो टॉप लेफ्ट में नेम है, टॉप राइट में टोटल सीट नंबर है, टॉप बॉटम में डेट आपको देना है, सिग्नेचर देना है। और ये जो आपको जो डिजाइन देना है ना, इसमें देखिए कोई भी रेफरेंस न्यूमेरल नहीं है। पेटेंट में रेफरेंस न्यूमेरल है, यहाँ कोई भी रेफरेंस न्यूमेरल नहीं है। यहाँ आपको पर्सपेक्टिव व्यू देना है, कोई भी कटआउट व्यू या क्रॉस सेक्शनल व्यू ये नहीं चलेगा। एवरी प्रोडक्ट एवरी एंगल शुड बी क्लियर, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ऑब्लिक व्यू, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि नोवेटी कंप्लीटली डिसाइड किसमें है, इसके ड्राइंग में, इसके डिजाइन में, ओके। और इसीलिए वो बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऐसा क्लेम नहीं होना चाहिए जो आप ट्रेडमार्क के लिए आप यूज कर रहे हैं वो आप डिजाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी वर्ड, लेटर, नंबर और ट्रेडमार्क अपीयरिंग इन द रिप्रेजेंटेशन वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव व्यू के फॉर्मेट। बैड क्वालिटी पिक्चर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और रोल आईपीआर का रोल समझना जरूरी है, एनकरेजमेंट ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, okay, providing rewards and exclusive right for disclosure, making profit or earning royalty through putting the invention into practice, okay, and transferring your public property। आपको जो भी टेक्नोलॉजी है वो टाइम कंप्लीट होने के बाद, जैसे पेटेंट का 20 साल का, 20 साल के बाद आपकी जो टेक्नोलॉजी वो आपको पब्लिक में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। So what to do? Share benefit of patent system। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करिए R&D एक्टिविटीज के थ्रू, ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करिए जुडिशियसली, एंड आपको अर्न करना है थ्रू दिस प्रोटेक्टिव मार्केट, ओके। जो भी मार्केट है उसमें क्या आप कैसे अपने प्रोडक्ट को आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने रेड ओशियन क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी बिना आपके इंफॉर्मेशन के, आपके परमिशन के बिना वो आपके टेक्नोलॉजी को कोई भी यूज नहीं कर सके, ठीक है। सो ऑल दिस फ्रॉम माय साइड। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू प्लीज आस्क। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू मस्ट आस्क। Yes, anybody else? Please ask any query, because we are going to file the patent during this FPP. So I have to unmuted all. So if you have any question, you please ask. Good morning, sir. I have one question. Am I audible, sir? Mic off, sir.
Hello? Yeah, am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes. The question is, recently, 3-4 years back, I filed one patent, Indian patent, but it took a long time to get approved. Patent. So, is the process now faster than the earlier one? Faster, slower, it is depends on the case. Suppose that, that's why I am asking how much time it took to get the final disclosure. 1 year, 2 year, 3 year, how much time it took? Yes, it took, actually I filed it in around 2011 or so and got awarded in around 2018. Your name and Dr. Kotwal. Get published. If you want early publication, you will file Form 9. Otherwise, it will publish in the 18th month because 15 months is the withdrawal time. After that, after publication, you have filed the Form 18. Form 18 after that, you have filed after that. So, it will take time. Okay. So, important is that it is reciprocating. Yeah. Where is the lacuna? That should be cleared by looking at the case specification of the case. All right. Thank you. So can I ask one question? Yes. Sir, actually if our students want to file a patent, so is there any different procedure for the students or for the professionals? Student can be taken as an extra person. Okay, so there is no category student faculty. No, nothing. It is just not like it is a commercial thing. First thing, second thing, it is Okay. anything is there. It is a 1,600 rupees is the Form 1 fees, and 4,000 is the printing fees. 5,600 everybody can buy. It is the minimum cost. So after that, they can buy this application, and if it belongs to the invention, and if that invention is novel and new, then you will get the patent certificate. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, sir. For the provisional patent, there is a period of 12 months. If I have filed for the provisional patent, then go for the newspaper publication or not? What is the procedure for that? Yes, after the provisional patent, you cannot do for the there is one process. When you will file your application, okay? So initially it is provisionally filed for the 12 months. So after 12 months, it is not published. When you file the specification, after that office is going to publish it. Okay? So after complete filing, provisional application is automatically not going to publish. But publication, you have to file the specification. After complete specification, from that time, it will take 18 months to get it published. So that's why after that the process will go on. If you want to file after filing provision, you can file go for any publication, you can publish. But your publication date will be filing. Sorry, your provisional filing application filing date will be the filing date of your application. Okay? If only the publication certificate will get and not publish the patent, it will be beneficial or? I am not getting your point. There is no certificate issuance from the office for the provisional filing. Certificate for the patent. When your application is being approved, after that you will get the patent certificate. After examination, you will get the patent certificate. Certificate is awards, these are applicable. Hello.
such, you cannot say anything about the patent gazette exam. So, and yearly from our website, just I want to say that from in our official website, we release the dates and schedule of the patent gazette exam, and you can visit that website and you will get the details from there. So, at the moment, we cannot give so much insight into that. So, all the details you will find there. Because every time the process of conducting that exam changes. It is not fixed that this will be only the criteria. What the criteria office will follow, it will be clearly published in that exam, in that notification. Okay? So filing patent to be near the attorney or it's not benefited at all? What? Please, what you said? Filing patent to be near the patent attorney is benefited? Benefit? This is subjective matter, how I can say yes or no. If you are very crafty, then you can put your application for the patent. If you feel that needs a certain extra agency, certain help, so you can take help to the agent. That is completely your call, your choice. Because better service means everything is there. That is completely your choice. You cannot say that you should file or you should have the patent. This is not our call. That is your call. Good afternoon, sir. My question is the process of granting and filing a patent the same for a totally new and innovative software? See, software per se is not patentable. You have to see section 3A, okay? So, you just after this session, you just type section 3A. And you will also get an elaboration regarding section 3K. It says that computer software is not patentable per se, but that software is combined with hardware, then it will be patentable. Suppose that Bluetooth device is there. Bluetooth device will not run all types of devices. It will run on a specific type of devices. So Bluetooth device, Bluetooth with a certain device you can find for the patent. Okay? Similarly, GPS tracking system is there. GPS tracking system will run on a particular type of device. So, or like Android application is there, it will run on a particular type of device. So system plus means plus function means is your device, function is your technology, your software. So per se is not allowable, but with certain means it is allowable. Okay, the device plus function, both are important. So please see section 3K in this regard, and you will get a further detail with you. Okay, sir. Hello, sir. Yes. One question: what is the difference between ordinary patent and conventional patent? See, conventional patent, what I want to say that there is a convention agreement, okay, between the countries, almost 200, less than 200 and 190 or 183 countries are there who have signed the convention. They have based convention they have signed. So, and they have agreed that what the facility they will give to their resident, the same facility will be given to the person, to the country who has signed that convention, the convention treaty who has signed. So, under this treaty, when you have filed your application in your country, so you can enter into that country within 12 months of the time. 12 महीने के अंदर में आप उस कन्वेंशन कंट्री में एंटर कर सकते हैं. जैसे आपने इंडिया और जैसे इंडिया, अमेरिका, यूरोप, जापान के सारे कन्वेंशन कंट्री के मेंबर हैं. तो आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया तो 12 महीने के बाद आप अमेरिका में भी फाइल कर सकते हैं. 12 महीने के अंदर, 12 महीने के बाद नहीं. कन्वेंशन में 12 महीने का टाइम है और पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी जो उसमें 31 महीने का टाइम है. ठीक है, 31 महीने तक जा सकते हैं और 12 महीने के अंदर आप कन्वेंशन में जा सकते हैं. तो ये एक तरीका है. जैसे कि मान लीजिए आपको किसी के घर
तो ये 12 months के अंदर अगर आपको फाइल करना है तो कन्वेंशन एक्टिविटी को आप फॉलो करिएगा, कन्वेंशन एप्लीकेशन को। अगर पेटेंट कॉर्पोरेशन के पीसीटी के थ्रू जाना होगा तो 31 मंथ का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये अंतर है तीनों, ठीक है। वो पाया क्लियर? Yes, thank you, sir. Hello sir. When a particular would be say protected, like when a product gets published on a patent site or when the patent has been granted. Yes, the second part is that publication is one of the position. Suppose that you have filed any application and office will publish it. After publication, it will go to the public domain. After that, anybody can file a position. Okay? So that is the main purpose of the publication. The person who is working on that, he can file for the position that this is my product, my invention. Okay? So for the purpose of the main purpose of publication is the position. And meanwhile, you do the examination on that application also. And during the examination, whatever the objection, it will be sent to you. You will file the reply, and if your reply is satisfactory, after that it will be get granted. After grant, you will get a patent certificate. And after getting the patent certificate, within 1 year of time, there is also post-grant apposition. After grant, there is post-grant apposition. Within 1 year also, anybody can also file the post-grant apposition. So that is the main opposition lies on that ground. So publication doesn't qualify for the granting. Okay? Okay, sir. Thank you. Hello sir. Hello. Yes, ma'am. I am listening. What is the patent and trademark? पेटेंट टेक्नोलॉजी को लिया जाता है। कोई इन्वेंशन है, जैसे कि इन्वेंशन के लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। और ट्रेडमार्क हो गया व्यापार चिन्ह। कोई आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार के लिए आप चाहते हैं कि उसको देखते के साथ ही कोई समझ जाए ओके ये इस व्यापार का चिन्ह है। जैसे कि सीसीडी हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, कोका कोला हो गया, तो आप उस लोगों को देख के समझ जाते हैं अच्छा कोका कोला है, ये एडिडास है, ये नाइकी है। तो उस व्यापार का वो चिन्ह हुआ। जैसे कि आपने एप्पल का वो लैपटॉप बना हुआ है, तो आपने जो लैपटॉप दिया, लेकिन वो लोगों को देखने के साथ आप समझ जाते हैं अच्छा ये एप्पल का प्रोडक्ट है। तो टेक्नोलॉजी अलग चीज हो गया और उस टेक्नोलॉजी के प्रचार के लिए, उस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप जब आप उस प्रोडक्ट के लिए आप कुछ एक चिन्ह बना देते हैं उसको, वो चिन्ह बहुत तरह के टाइप का होता है। तो दोनों दो चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो पेटेंट जो होता है वो टेक्नोलॉजी के लिए किसी इन्वेंशन के लिए दिया जाएगा। और व्यापार चिन्ह है कि अगर आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो उस प्रोडक्ट के साथ आप कुछ एक लोगों के साइन भी बना देते हैं कि ये पूरे प्रोडक्ट को देखने से अच्छा आप उस लोगों को देख लीजिए, वो लोगों मेरा वेरीफाइड है। तो वो उस लोगों को देखते के साथ लोग आपके प्रोडक्ट पे लोग भरोसा करने लगते हैं। तो दोनों का पर्पस अलग है। Okay, thank you, sir. हेलो सर, पहले पेपर पब्लिश किया हुआ है और अब हम उस पर पेटेंट फाइल कर सकते हैं। 12 महीने का क्वेश्चन पीरियड ये रहता है कि 12 महीने पहले अगर आपने फाइल 12 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है तो पेटेंट फाइल करने के लिए वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि फिर वो पेटेंट मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है वो। अगर 12 महीने का टाइम नहीं है, अगर नहीं निकला है तो आप पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। मतलब 12 months में पब्लिक मतलब ये नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आज आपने फाइल, अगर आज आपने क्या कहते हैं पेटेंट फाइल किया है और 6 मंथ पहले अगर आपने पब्लिश कराया है तो वो कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन 12 मंथ से ज्यादा का टाइम भी हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है। Hello, sir. हाँ, yes, Sir, what is it? Patents.
इसके लिए आपको पेटेंट दिया जाएगा। लेकिन कॉपीराइट में अलग अलग फील्ड में जो मैंने बताया आपको, आपने लेक्चर देखा होगा, लिटरेरी वर्क, ग्रामेटिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफी फिल्म, इन सारे फील्ड में कॉपीराइट किया जाता है। आपने कोई पोएम लिखा, कोई आपने आर्टिस्ट का काम किया, कोई सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम आपने सॉफ्ट बनाया, जिसके लिए आप कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं। साउंड को तो, लेकिन पेटेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी को मिलेगा, सिर्फ इन्वेंशन के लिए पेटेंट होता है। ठीक है, ये दोनों में ओके Sir, can a business idea be patented, or we should patent the business logo or any particular design which is being used for a business? देखिए, अगर बिजनेस आइडिया सेक्शन 3 के अगर आप पेटेंट कर लीजिएगा ना, तो बिजनेस मेथड को पेटेंटेबिलिटी की क्राइटेरिया से बाहर रखा गया। तो बिजनेस मेथड, बिजनेस लोगो, जैसे कि आजकल बहुत सारे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बहुत सारे लोगो चलते हैं ना बिजनेस का, तो उस तरह का लोगो एप्लीकेबल नहीं होता है इसके लिए पेटेंटेबिलिटी के लिए। तो बिजनेस मेथड अलाउएबल नहीं है। ठीक है, आपके पास सेक्शन 3 के अभी जो टाइम नहीं होता, आप सेक्शन 3 के जो है ना, उसको टाइम मिलेगा तो आप उसको देखिएगा, बिजनेस मेथड, हाउ टू गेट अ पेटेंट विद द बिजनेस मेथड। ऐसा इंडिया में भी अलाउएबल नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, दूसरे कंट्री में शायद अलाउएबल होता हो, लेकिन अभी यहाँ अभी उसको हमने अलाउ किया है। Okay, thank you, sir. Sir, there is export patent application, in that one patent of petition. So, what is that actually? देखिए, पेटेंट ऑफ पेटिशन क्या होता है ना, या आपने मान लीजिए कोई पेटेंट फाइल किया, कोई मदर एप्लीकेशन है, ठीक है, फिर बाद में आपको लगता है कि इसमें क्या है कि मुझे कुछ और मॉडिफिकेशन आपने किया, तो आपने मॉडिफिकेशन आपने किया है, तो आप उसके लिए पेटेंट और पेटिशन फाइल कर सकते हैं। जैसे कि क्लेम में 5 फीचर था, आपने जैसे कि स्पेसिफिकेशन में 5 फीचर था, आपने क्लेम में 2 ही फीचर डाला, बाद में जो 2 फीचर और 3 फीचर और बचे थे, उस पर भी आपने काम किया और उसमें भी आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या पेटेंट और पेटिशन फाइल कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन जो है ना, प्रायोरिटी डेट आपको वही वाला रखना पड़ेगा, जो मदर एप्लीकेशन का जो फाइलिंग डेट है ना, वही फाइलिंग डेट आपको पेटेंट और पेटिशन का भी रखना पड़ेगा। आपका जो 20 साल का जो टाइम है ना, वो मदर एप्लीकेशन से नहीं काउंट होगा, ठीक है ना, तो वहीं से काउंट होगा। और आपको मान लीजिए कि आप और आपने 10 ईयर्स के बाद आपने पेटेंट और पेटिशन फाइल किया, तो आपको 10 ईयर्स के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो चीज है, और कोई सपोर्ट हाँ Sir, myself, Jamrani. I want to ask one question related to whether I can file a process which has a patent for solving a certain problem. Can I do that? Yes. Process and product both are patentable. Okay, with some application. With some application. A process with some application can be filed as a patent. Application means suppose increasing productivity or increasing efficiency, like that. It is welcome for the patent filing. Suppose that by certain process you are making more efficient fuel. Suppose that any bike has 73 km per liter. Now by any process you are improving 73 to 75 km per liter. So that you are making more efficiency, increasing efficiency of that product. So that process is welcome. Any process method, which is I told none. That comes under inventive step, technical advancement. So you are making more technical advancement. So that is welcome on the patent side. Thank you. Thank you. Yes, sir. Can we make a patent on Python programming? Hello. इस पार्टन मैं सुना कि फिर से बताइए। Patent on Python programming. I am not able to listen you. Can you write in the chat box? Hello. Hello.
spelling name of patent on Python programming. Python programming? Patent programming? Yes. Yes. Patent programming, as I told you, software related software per se is not patentable under section 3K. So it should be means plus something. Please refer section 3K in the Act 1970. Please use see that, and on the basis of that you get this question. The last question. Anybody else? Hello. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. I have one query, sir. Yes, sir. If suppose patent is published on the patent website, as per your say, it should be examined within 48 months. If somebody forgets to examine that, then what to do? Still complete after that, I will say. Whether same idea can be filed for the patent or not? मैं क्या समझ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ. आपने बोला कि आपने एप्लीकेशन फाइल किया वो 18 मंथ्स में पब्लिश हो गया, ठीक है? फिर वो 48 मंथ में उसका एग्जामिनेशन होगा, ऐसा कहीं नहीं है. जब वो पब्लिश होगा तो आपको फॉर्म 18 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना? 48 मंथ का टाइम था, वो 31 मंथ कम कर दिया गया है. तो 31 मंथ के अंदर आपको फॉर्म 18 फाइल करना पड़ेगा. फॉर्म 18 फाइल करने के बाद क्या होगा कि फिर वो हम लोग एग्जामिनेशन को कंसिडर करेंगे और वो 2-3 महीने के अंदर फिर वो एग्जामिनेशन हो जाएगा. उसका एग्जामिनेशन के बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको 6 महीने में दिया जाएगा और फिर आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको मिलने के 6 मंथ के अंदर आपको रिप्लाई सबमिट करना होगा. जो पहले 12 मंथ का टाइम था उसको 6 मंथ कर दिया गया है. आपको 6 मंथ के अंदर उसका रिप्लाई सबमिट करना होगा. अगर रिप्लाई सबमिट हुआ तो फिर आपको ग्रांट हो जाएगा. ओके. So thank you, Dr. Raju Kumar sir. It's a pleasure for me that you have clarified all the doubts of all the participants. See that we have organized this 1 week FDP. So the filing process of all the participants, faculty members, that we are completing, and I am confident that few patents will be filed in this week of 10 to 14th of the June. And we are sitting right now in Product Innovation Lab where the products are invented, but now we are taking care that the invented product should be patented. So I am proud of you that sir, you have given a thought in such a way that now we will definitely file the patents, whatever the products that we are making, whatever the process improvement we are doing, whatever your guidelines are there, we will follow. And in future also we will contact you regarding our clarification of the doubts. But I am really thankful to you for valuable guidance during this this FDP session. I am proud of you and definitely we will work hand in hand in future also. I am really thankful to you for giving nice guidance, nice suggestions, nice advice, and now we will take care that maximum Indian patents will be filed in coming days. Thank you very much sir. Thank you sir. And I have also shared the feedback form with the program coordinator. So sir, please circulate among the participants. वो सभी लोग वो भरते हैं, वो फीडबैक फॉर्म भरते हैं, सर्टिफिकेट इशू होगा उसके बेसिस पे. और उस फीडबैक फॉर्म में क्या है कि हमने एक लिंक शेयर किया, उस लिंक को क्लिक करने पे जो आज का जो सेशन है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. इससे ज्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म एंड कोऑर्डिनेटर फॉर्म आल्सो आपको फिल करना है. सो क्या है कि मैं आपको वो लिंक दे दूंगा कोऑर्डिनेटर फॉर्म का, और मैंने ऑलरेडी अटैचमेंट में भेजा होगा, तो फिर उसका सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. सो आई विल एंड दिस सेशन. Thank you sir, thank you. Definitely I will share the feedback link with all the faculty participants and the students join, the research students join.
Thank you very much, sir. Thank you. Okay. Sure. So thank you all the faculty participants that today we are now ending this first morning session with the orientation, the importance of this IPR, trademark, copyright. Now after the break of some 10, 20, 15 minutes, Dr. Professor Dipti Patil Madam, the board member of IT department, will be joining us in offline mode. We are going to follow the step-by-step procedures so that the outcome of this FDP will be filing the patent. Thank you everyone for joining this session. Thank you. This first morning session is over now. Thank you.